Hello friends, I am Parvinder RANDHAWA from IBSL India. This video is related to true false not given of Ielts section. In other words, I want to say this video is related to reading section, right? And in this I am going to discuss true, false and not given. In my next video you will find a complete description on yes, no and not given. And in this video I will try to make a point what's the main difference between true, false, not given and yes, no, not given. And you are watching my YouTube channel, that's Parvinder RANDHAWA Guru, and this is my contact number, that is +91 94160 85201. Right. In this case I have selected one thing so that I can explain the meaning of true, false and not given. Basically the thing is that true, false, not given, as everybody knows, these are based on facts, and whatever I have realized, or I want to say that I have researched, if the topic is related to any historical thing, that is your history, then the questions are made according to true, false. Remember one thing. But if the topic is on the, as we can say that, opinion of a writer or argument of a writer, then the questions are based on yes, no and not given. This is the main difference I have seen in true, false. But sometimes whether there is a research paper, right, try to understand the thing, whether there is a research paper, you will find true, false in that also. But there are some words I want to say, just like we can say that should, which describes the opinion, would. These are mostly you will see in yes, no, not in true, false. So remember this thing also. Now let's go to the main point, that what we have to do today. These are just, you can check here, this is true, false, not given. This is a very small passage I have selected, and it is related to a history also, right? And these are the questions on which I am going to work, that is 28, 29, 30, 31, 32. 21 is highlighted, 28 is highlighted. That is, now I am going to do first, I'll do, then I'll explain that how I did, right? So in the mid 20th century there was a, now time starts, please check the time, in breaking the 4-minute mile. So there is mid 20th century, you can check 1950s is there, right? And the race to break the 4-minute mile, you can check, there is a 4-minute word here, 4-minute is also here, right? Became a major challenge and there is a little interest. So straightway the answer is here, false, right? If it is written in caps, so try to write answer also in caps. We'll discuss later on as according to my commitment. In the early 1950s, the media promoted the idea that nobody could run a mile in under 4 minutes. Turn of the 20th century is, I got here 1952. Press I have got from here, which is equal to the media. Promoted, regularly stated at that time is same time here, nobody could run a mile under 4 minutes. That man had reached his
athletic limits, the room for improvement was minimal. So what is the athletic limits here? He is talking about 4 minutes 10 seconds world record stood at, and they can say under 4 minutes. So I think the answer is true. Now I'll go to next one. 1980, I will check then the name of this person. 1500 meters in less than 15 minutes. First I'll check 1980. Yes, it is in front of you. He said similar achievement. He said 1500, 1980, 1500. Then comes less than 15 minutes. First man to break 15 minutes. So naturally, the answer is true according to me. Because there is a complete cut-off line. Then there is John and Roger. So he said LNDY and Bannister, both are there. Professional, he is saying, linked to amateur environment. So naturally, instead of reading, I'll go to the false. He said his record was broken within 3 years. He said was broken. He said has since been reduced by a further. So there is no time. So when there is no time, then answer is not given. Now this I have done. Now I am going to discuss. 1, 2, 3, 4, 5 questions are there. Please remain subscribed to my channel. And I also want to say that subscribe my channel. Because next video it's coming on yes, no and not given. If this is on true, false and I will try to, what I am thinking to do, I will try to understand me, make a great difference between true, false and not given. Right, as well as yes, no. Because I am trying to do something unique in these videos. 2 videos are there so that you can get the right meaning. I want to say I'm not right, but I am sure it may help you in your test also. Right? So remember this thing. Now let's go started how these are the answers. In 28th, what I will do in the test, I will underline, yes, one thing. One video also you will get. These are always in order. That is true, false. These are always in order. Please remember this thing. I am saying in the mid 20th century, there was little interest in breaking. So what I will do in the paper, I will underline mid 20th century. Interest I will underline. Breaking this is math term, I'll underline. And little interest also. Then I'll go to 29th in the test. I will underline the time period, that is early 1950s. The media, that is noun here again, I'll underline, promoted the idea, noun, that nobody could run a mile under 4 minutes. That you have to run a mile under 4 minutes, less than 4 minutes. It means this one. It may be 3.58, 3.59. Then I'll go to next one, 1980. Then Vladimir swam 1500 meters in less than 15 minutes. So I will underline 1500 meters. Name of person is there. Less than 15 minutes. That I will underline. Right. Now these are the 2 persons. They were professional sportsmen and within 3 years.
Now let's go to the 28th and try to find first this one, that how I got the answer. He said in the mid 20th century. Okay, I am agree with you. Mid 20th century, there was little interest in breaking the 4-minute. He said the race to break the 4-minute mile, 1 minute, 4-minute, right, mile and 4-minute mile, break with break, reached a crescendo in the 1950s. Mid 20th century. 20th century is equal to 1900 to 199. And what is the mid period here? That is 1950, 1945 or 55. He said became a major sporting challenge, and he said there was little interest. Here it was became a major sporting challenge that I will break the record. I will break the record. But he's saying there was little interest. So naturally, the language is just opposite of it. It means what I did. First I selected year, then I took to the human, because who has to break the record? The human. And they little interest, here they are saying major sporting challenge. This is my first time. So next, that's why it's false. In the early 1950s, right, he is saying 1952. That means early 1950s means, if I am not wrong, it is 1950, 51, 52 and 53. Right. So naturally, my 1952 is here. He said, but despite efforts around the globe, by 1952, the record remained intact. It means there was a record. He said, but my answer is not here. How I got? I already told you. He has written here very clearly at that time. It means at that time is equal to 1952, that's equals to 9, that is early 1950s. He said the media, he said the press. Okay, I am right. Promoted, he said regularly stated. Stated is there. That man had reached his athletic limits. That semicolon. Room for improvement was minimal. So there was minimum room for improvement. Okay. Try to check the language. It's very puzzling, I want to say here. Right. What the person is saying to you, try to check. 1 second, check the sheet. He said, at the turn of the 20th century, the world record had stood at about 4 minutes 10 seconds. And what is written here? Under 4 minutes. Right. But despite efforts around the globe, nobody was there to break the record. The press regularly stated at that time, promoted the idea. Try to understand the thing, what I want to say. Just that man had reached his athletic limits. Which limits? This one. That room was minimal, even nobody could run a mile under 4 minutes. Got it? Because the record was at 4 minutes 10 seconds. This is the point here. Try to understand what I want to say to you. Remember my point, please. How he
Maybe some of you get puzzled, may some of you get answer at the first, or I want to first instance, or I want to say that straight off you will get answer. But some of you maybe get puzzled. So remember one thing. Next, 1980. He swam 1500 meters in less than 15 minutes. So that's why it's true. I gave the answer of 30th. 1980 cuts with 1980. Very clear. Became the first man to break 15 minutes. To break 15 minutes for 1500 meters. 1500 meters with 1500. Less than 15 minutes to break 15. Because he broke 15 minutes. It means 14.59, 14.58, 14.56, anything. Check my language. But not 15. It means less than 15. So this is a fact here. That's why we say true, false are based on factual situation. Information is factual. He clearly mentioned here the man to break 15 minutes for 1500 meters. First man. 15 minutes. Got my point? So that's why it's true here. That's why I gave true. This is simple 31. They have clearly linked to amateur environment. I am a marathon runner. I am not running for money. I am running for my, you can say that I am fond of running. Right? So that's my amateur environment. Same is with this person. Both. They were is linked to the amateur in which they competed. So past tense is there, were is there, that's also past tense. If you are getting money for running, you are professional. If you are not getting money for running, because they have clearly mentioned no money, right? Money or monetary reward. It means you are just participating. Even next is his record was broken within 3 years. His record has since been reduced. Has since means till date. And he said was broken. So here the tense was used in that is simple past passive form. Here tense was used that is present perfect. Tense problem. Since reduced, it means when reduced, within 3 years, within 5 years, nobody knows, or within this task when this situation was written. When it was reduced, nobody knows. But here clear mention is 3 years. So please check it properly. Then we, right? And I will continue this video in Hindi also. In the meantime, you can check this video, please. Just check the passage first. Then I will give you the questions. Just check this passage. I've started from the race to break the 4 mile reached day. This is a passage I have done to you. Why I gave the answer? I told you. How I gave? I told you. Right? I have discussed it properly. Now please let's move in Hindi. सबसे पहली बात कि ट्रू फॉल्स और यस नो में मेन क्या चेंज है. ट्रू फॉल्स हमेशा हिस्ट्री बेस्ड होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, रिसर्च होती है जिनमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं. राइट. और जो यस नो है वो राइटर का व्यू हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकती है, ओपिनियन हो सकता है. ये मेन डिफरेंस है ट्रू फॉल्स और नॉट. बी द पार्ट ऑफ माई यूट्यूब चैनल. आप मेरे साथ रहिए. नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो यस नो नॉट गिवन पे है. उसमें बताऊंगा कि मेन
हमें कैसे यूज़ करना है, मेन फैक्ट्स क्या हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना है। ये वीडियो पहले मैंने इंग्लिश में डिस्कस किया, अब मैं हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ इसको। राइट, एक पैसेज जो मैंने पार्ट ऑफ पैसेज लिया, पैसेज नहीं कहूँगा। सबसे बड़ी बात, ट्रू फॉल्स हमेशा ऑर्डर में आते हैं। रिमेंबर वन थिंग, मैं हमेशा कहता हूँ, फिर दोबारा आज कह रहा हूँ। मैंने कुछ इसमें हाईलाइट किया, पहले आंसर सॉल्व किए माई इंग्लिश जो इसका फ्रंट पोर्शन वीडियो का है, उसमें मैंने बताया मैंने कि देखो इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है मिड 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में 1900 से स्टार्ट होकर 1999 तक चलती है। मिड का मतलब 50s 40s 60s तक चली जाएगी। अब इसने क्या लिखा, देयर वॉज ए लिटिल इंटरेस्ट इन ब्रेकिंग द 4 मिनट माइल। कोई रिकॉर्ड है 4 मिनट का, बड़ा कम इंटरेस्ट था। इसने कहा द रेस टू ब्रेक द, चेक द लैंग्वेज प्लीज, द रेस टू ब्रेक द 4 मिनट माइल। 4 मिनट के साथ मेरा 4 मिनट कट गया, ब्रेक के साथ मेरा ब्रेक कट गया। रीच्ड ए क्रिसेंडो इन द 1950s। 50s मेरा आ गया मिड 19th सेंचुरी से। उसको लो मैच करता जा रहा है मेरा, टाइम मैच हो गया, राइट, डिस्टेंस मैच हो गया, डिस्टेंस के पहले दी लगाया हुआ है, ब्रेक मैच हो गया, एवरीथिंग मैच हो गया अभी तक, राइट। लेकिन जो पॉइंट है यहां पे क्या, एक ह्यूमन के पॉइंट को ले आए, डेट इज लिटिल इंटरेस्ट। तो ये ह्यूमन का होएगा ना, रिकॉर्ड ह्यूमन ने ब्रेक करना है। और इस पर्सन ने क्या कहा, बिकेम ए मेजर स्पोर्टिंग चैलेंज ऑफ द डे, कि वो स्पोर्टिंग चैलेंज बन गया था। ये बोला कि लिटिल इंटरेस्ट, स्पोर्टिंग चैलेंज भी मेरा इमोशन है, लिटिल इंटरेस्ट भी मेरा इमोशन है, राइट। चैलेंज लेना मतलब ही मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा, इंटरेस्ट लेना मुझे कोई मतलब नहीं रिकॉर्ड से। आंसर आपके सामने है, इसलिए ये फॉल्स है। नॉट गिवन क्यों नहीं है, क्योंकि अब एवरीथिंग इज मैच। सिर्फ जो फैक्ट है, फैक्ट वहां पे क्या है, स्पोर्टिंग चैलेंज का, वहां है लिटिल इंटरेस्ट का, वो आपस में मैच नहीं। ये तो था मेरा पहला पॉइंट कि फॉल्स क्यों है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे गया, डेट इज 29th पे। In the early 1950s, the media promoted the idea that nobody could run a mile under 4 minutes. 50s जो मेरा 90 होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शीट के ऊपर, 50 भी हो सकता है, 51 भी, 52 भी, 53 भी। मीडिया ने आइडिया प्रमोट किया कि कोई भी 4 मिनट्स के अंदर एक मील या 1 माइल नहीं रन कर सकता। यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। एट द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी, मुझे अभी तक अर्ली 1950s नहीं मिला। द वर्ल्ड रिकॉर्ड हैड स्टूड एट अबाउट 4 minutes 10 seconds। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था 4 minutes 10 seconds, अंडर 4 में। बट डिस्पाइट एफर्ट्स अराउंड द ग्लोब बाय 1952, अर्ली 1950, द रिकॉर्ड रिमेन इंटैक्ट। तो रिकॉर्ड क्या हो गया आपका, वैसे ही रहा। द प्रेस रेगुलरली स्टेटेड एट दैट टाइम, प्रेस ने उस टाइम स्टेट किया, जो भी है, दैट मैन की अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, दैट रूम इंप्रूवमेंट मुश्किल है। तो इसका प्रेस ने क्लियर कर दिया, भाई इसके इनसे रिकॉर्ड नहीं टूटना, सबने ट्राई कर लिया है। और यहां क्या है, उन्होंने प्रमोट किया कि कोई नहीं तोड़ सकता, राइट। तो ये चीज आपकी 29th जो मैच हो गया, और इसलिए ये आंसर आपका किस में क्या, ट्रू में। दैट्स द रीजन ऑफ ट्रू हेयर। देखो प्लीज डाउट। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्कआउट बहुत लंबा करना है अभी तो हमने, इसके बाद यस नो की वीडियो भी है। रिमेन, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, दैट्स परविंदर रंधावा गुरु। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, यू विल गेट नोटिफिकेशंस। मैंने आपको हमेशा कहता हूँ नोटिफिकेशन। हाँ, यहाँ जो मैंने शुड वुड लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं कि शुड वुड में मुझे ओपिनियन मिलता है। जब ओपिनियन आएगा तो ये यस नो में कई बार आपको मिलेंगे, बट ये ट्रू फॉल्स में बहुत रेयर चांसेस मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ओपिनियन आ जाएगा, राइट। रिमेंबर वन थिंग, ओपिनियन आ गया तो ये मिलेंगे नहीं, कुछ भी हो। फाइन, तो ये भी याद रखना।
So next, go to the next point. अब मैं आता हूँ आगे। 1980 इस पर्सन का नेम है, 1500 मीटर लेस देन 50 मिनट्स में इसके। अब मैं कैसे कहूँ कि ये लेस देन 50 मिनट्स है, क्योंकि जो मैंने लाइन मैच की वो कहती है, ये लाइन थी, मैं 1980, मैंने आपको बताया ना ऑर्डर में आते हैं, 1980 में आ गए आप, 1500 मीटर्स में आ गए। फर्स्ट मैन टू ब्रेक 50 मिनट्स, पहला मैन था जिसने ब्रेक किया 50 मिनट्स को, 50 मिनट के रिकॉर्ड को ब्रेक किया। कैसे किया? या तो 14.59 में गया या 14 पॉइंट उसमें गया। तो इसने क्लियर किया कि ये पर्सन 1980 में इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया, डेट इज 15 मिनट्स का 1500, इसका लो लेस देन 15 मिनट। ये फैक्ट है। उसने कहा ब्रेक 15 मिनट्स, व्हाट यू मीन बाय 15 मिनट्स हियर? इट मीन्स 14.58, 14.59। और ये हिंदी का जो वीडियो पोर्शन है उनको डेडिकेटेड है, जो पीपल बार बार मैसेज करते हैं कि हिंदी में बनाओ एक, राइट, ताकि वो लोग भी समझ सके अगर उनको प्रॉब्लम है प्लीज़। तो मेरी अब मैं ट्राई करूँगा हर वीडियो पहले इंग्लिश में हो, बाद में हिंदी में हो, ताकि इंग्लिश वाले भी गुस्सा ना करें और हिंदी वाले भी रूस ना जाए। फाइन, सो दैट्स द रीज़न हियर, प्लीज़ चेक लेस देन 50 मिनट्स। उसने कहा ब्रेक 50 मिनट्स। आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सो। आगे ये बहुत क्लियर है, सिंपल था, ये बिल्कुल प्रोफेशनल है। उसने क्लियर किया एमेच्योर इन्वायरमेंट है। एमेच्योर वो होते हैं जो पर्सन शौकिया काम करते हैं, और आगे उसने क्लियर किया उनको कोई भी बेनिफिट नहीं बना। ये देखिए आप, ये दोनों पर्सन मिल गए आपको। लिंक टू दिस इन्वायरमेंट फॉर बोथ मैन रनिंग वाज एंड असाइड टू द रियल मैटर्स ऑफ लाइफ दे रिसीव नो। ये मेरे लिए सबसे ईजी क्यों रहा? क्योंकि आई एम अ मैराथन रनर और मैं फॉन्ड ऑफ हूँ बिना पैसे के, बिना प्रोफेशनल के मैं रनिंग करता हूँ। आई लाइक टू रन, राइट, सो दैट्स द रीजन हियर। तो आई थिंक तो मुझे आइडिया अपने आप से भी मिल गया, बट इसमें क्लियर है। इसने कहा इसने रिकॉर्ड तोड़ा विद इन 3 ईयर्स, और इस बंदे ने कहा हैज सिंस बीन रिड्यूस्ड, कि उसका रिकॉर्ड 17 सेकंड से रिड्यूस हुआ। कब हुआ? हैज सिंस में कोई हमारे को क्लियर ही नहीं कर रखा इस पर्सन ने। हैज सिंस का मतलब प्रेजेंट, सिंस बीन प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे कौन सा टेंस है आपका? पास्ट टेंस। तो मैं कैसे कंपेयर करूँ? ये लिंक तोड़ रहा है पास्ट, ये लिंक को जोड़ रहा है, तो इनमें डे एंड नाइट का डिफरेंस हो गया। अब डाउट हो सकता है कि यहाँ पे इज लिंक टू लिखा इन विच दे कम्पीटेड, ये कहता है वर है, यहाँ इज है, फिर क्यों लिखा? देखो आप आगे जाके इसने बड़ा क्लियर किया, दे रिसीव्ड नो मॉनेटरी बेनिफिट एंड दे कम्पीटेड, पास्ट टेंस में ले गया, यहाँ भी पास्ट था। तो ये मैंने डिस्कस किया 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन लिए गए हैं मेरे सेक्शन पैसेज नंबर 2 से, और यही यूज़फुल है मेरे जर्नल के लिए भी और यूज़फुल है मेरे एक्का के लिए भी, दोनों टेस्ट के लिए यूज़फुल। So this is about this video in which we have done a lot of things about true, false and not given, that how to get the real meaning of true, false and not given, and how to extract the answers. And you are watching my YouTube channel, that's Parvinder RANDHAWA Guru, and this is my contact number. I am always with you, right? But still I have limits, remember this one. So, and please like, comment and share my YouTube channel, as well as please subscribe so that you will get the notifications. Thanks for watching this channel. Thanks once again, especially this video.